Hello everyone, welcome to the soft computing lecture series. Today we'll be doing the topic that is bidirectional associative memory, call it as BAM. So इसके पहले लेक्चर में हमने associative memory स्टडी किए थे. There are two types of associative memory. Now इसके बाद ये भी एक टाइप है associative memory का, but it is bidirectional. तो let us see some important points regarding the BAM. So BAM was developed by Costco in year 1988, and BAM is a recurrent hetero-associative pattern matching network which performs forward as well as backward associative searches for stored stimulus responses using Hebbian rule. तो सबसे पहले तो BAM is recurrent, यानी हम इसमें feedback यूज़ करते हैं. We are using some type of feedback. Then second is hetero-associative है. So as we know, hetero-associative में क्या होता है कि we are मैचिंग द पैटर्न्स ऑफ वन क्लास विथ अनदर क्लास, है ना. तो यहाँ पर दोनों सेम इनपुट जो है और आउटपुट दोनों सेम नहीं रहेंगे. दे आर रिलेटेड विद सम मे बी सम दे हैव सम रिलेशन बट दे आर नॉट सेम इन द सेंस. जैसे इसके पहले लेक्चर्स के हमने देखा कि हमने एक इमेज इनपुट पर दिया जिसमें कुछ नॉइज़ था. तो वो जो नेटवर्क हमारे पास है एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क, वो हमको वो इमेज को पूरा बना के दिखाएगा कि ये इसका इमेज है. ठीक है, जो हमने टायर का एग्जांपल दिया था, वी हैड अ टायर, उसको इमेज डिस्टॉर्टेड इमेज था, उसको हमने पूरा टायर ही बना के इमेज दिया. एंड इन केस ऑफ हेटेरो एसोसिएटिव हमारे पास हमने एक इसको इनपुट दिया, मे बी लाइक टायर ऑफ अ ट्रैक्टर, तो उसने हमें आउटपुट पर ट्रैक्टर प्रोड्यूस करके दिया, आउटपुट हमें ट्रैक्टर दिया. सो दिस इज़ हेटेरो एसोसिएटिव. ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टाइप के सर्च प्रोड्यूस करता है. ओके, अगर इनपुट पे हम एक पैटर्न देंगे तो आउटपुट पे उसका एसोसिएटिव हमें आउटपुट देगा, और अगर आउटपुट पे वो चीज़ देंगे तो इनपुट पे हमें फिर से वो प्रोड्यूस करके दे देगा. तो यानी ये दोनों सर्च करता है, फॉरवर्ड सर्च भी करता है और बैकवर्ड सर्च भी करता है. एंड देन जो लर्निंग रूल यूज़ करते हैं यहाँ पर, दैट इज़ हेबियन लर्निंग रूल इज़ यूज्ड. So it associates one pattern to another and vice versa. So BAM responds to inputs from both the sides. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हमारे पास ये एक इनपुट यूनिट है and this is the output unit, so when we give the input we get the output, and when this becomes the input we get this output here. Okay, तो दोनों वे में काम करता है, इस तरफ भी और इस तरफ, दोनों तरफ काम करता है. Then there are two types of BAM. One is discrete BAM, other is continuous BAM. Now this is the architecture of a BAM. Here we can see there are two layers. एक layer हमारे पास X है and there are some neurons here, and then we have Y. Now यहाँ पे हम arrow देखेंगे. ये जो arrow हम देखते हैं, ये arrow जो जितनी भी arrows हैं, तो they are bidirectional. एक ऐसा भी जा रहा है और एक ऐसा भी जा रहा है. Okay, so they are connected by, we can say एक ये जो एक हमारे पास weight है which is directed from X to Y, और दूसरा है Y to X. Okay, so BAM network consists of two layers of neurons which are connected by interconnections which are called as weights. Then next point, the BAM network iterates by sending the signals back and forth between the two layers until all the neurons reach equilibrium. So when we are training this network, तो हम लोग जो इनपुट देते हैं ये फिर से फीडबैक आके हमें एक वक्त आएगा कि जो इनपुट पैटर्न्स देते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि वेट जो है दे विल सेटल डाउन. ओके, नाउ द वेट्स एसोसिएटेड विद द नेटवर्क आर बाई डायरेक्शनल इन सच ए वे दैट इफ वेट एसोसिएटेड इन वन डायरेक्शन इज W, then the weight associated in opposite direction is W transpose. ठीक है, तो अगर एक डायरेक्शन का वेट अगर W है तो दूसरे डायरेक्शन का उसका ट्रांसपोज हो जाएगा वेट. तो दिस वे द वेट्स आर एसोसिएटेड. Now let's see discrete bidirectional associative memory. Now in this case the network consists of two layers as we have seen. Then two types of activation can be, हम यहाँ पे दो टाइप के एक्टिवेशन यूज़ कर सकते हैं. One is the binary activation, other is the bipolar activation. The weights in both the cases are found to be related as the sum of outer products of the bipolar form. ठीक है, हमने outer products मेथड पहले स्टडी किए थे. Now a non-zero threshold is assigned with the activation is a step function. तो यहाँ पर हम जो एक्टिवेशन असाइन करेंगे वो स्टेप फंक्शन असाइन करेंगे. ओके, now determination of the weights. How to determine the weights? So in this case, if
if the input vectors are binary and are denoted by SP, हमारे पास suppose training pair है और target is suppose TP, then the weight matrix can be determined by this formula. Okay, Wij from P goes from 1 to P to SIP minus 1 and so on. This is the formula for getting the weight matrix. And as we know, the input vectors can be binary, can be bipolar. Okay, as we have seen here, यहाँ पे हमने देखा था ये केस में, तो ये जो इनपुट हमारे पास बाइनरी भी हो सकते हैं, बाइपोलर भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं. तो अगर इनपुट्स बाइनरी रहेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इफ़ दे आर bipolar, then this is how we determine the weight matrix. So the weight matrix in both the cases are going to be in a bipolar form, irrespective whether the input vector is binary or bipolar. तो ये जो weight matrix हमको मिलेगा, चाहे input binary हो चाहे bipolar हो, weight matrix is always bipolar. Now these are the activation functions for the BAM. As you've seen, we have step function जैसे मिला है हम लोगों को. तो the activation function is based on whether the input target vectors pairs used are binary or bipolar. तो अगर बाइनरी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक्टिवेशन फंक्शन ये हो जाएगा yj is 1 if the total input is greater than 0. It is equal to yj if it is yn is 0, and is 0 if it yj is less than 0. And for binary input vectors, okay, this is what we have. Okay, sorry, ये एक bipolar होगा. Sorry, this is not binary, this is actually bipolar. Sorry, this should be bipolar. So for bipolar we have this. Okay, 1 is 1 and then minus 1, and here for binary we have 1 0 or whatever in yj we have. Okay, so this is bipolar. Now these are the activation inputs. Okay, for the input layer, ये input layer के लिए activation function था. Okay, now this was the activation for the output layer, क्योंकि हमारे पास दो layer है and we get a feedback. So you can see this was for y and this is for x. Okay, so this is the input layer, so we need one activation function even for the inputs. So this xi is 1. Okay, in case we are using a binary okay, binary input vectors if we are using, so we have this either 1 or 0 or maybe that same thing, and in bipolar we have 1 minus 1 or the same thing depending on this threshold value. Okay, now we need to test after. अगर हम एक बार ट्रेन कर देंगे तो आफ्टर ट्रेनिंग वी गेट अ वेट मैट्रिक्स. तो वेट मैट्रिक्स आने के बाद वी हैव टू टेस्ट द network. Okay, so how the testing is done? So the weights calculated through the training algorithm and activation are applied. Testing is done to recognize the test patterns, and this testing algorithm is used to test the noisy patterns entering the network. Okay, तो हम क्या करेंगे, उसे कुछ noisy images देंगे, noise के साथ images देंगे, तो हम देखेंगे whether it is able to produce what we want. The testing can be done using the following steps. ये हमारे पास कुछ steps है. सबसे पहला initialize the weights to some vectors p. Also initialize the activations to 0. Then we perform the steps 2 to 6 for the testing input. Next step is stepped activations x1 to the current input pattern. हम क्या करेंगे, एक वक्त में एक input pattern को हम activate करेंगे. Now यहाँ पर ये है कि because it is bidirectional, तो हम input x को देंगे तो y becomes the input, अगर y input पे देंगे तो x becomes the output. तो हम लोग फिलहाल एक ही डायरेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे. Then we can start go to the next direction. So then what we do is set the activations of x layer to current input. तो हम input जो input vectors जो देंगे वो, and similarly present the input pattern y to the y layer. Okay, now we cannot do both at the same times. तो सिग्नल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट करेंगे हम लोग. ठीक है, अगर हम x की तरफ सिग्नल प्रोड्यूस प्रेजेंट करें तो y को नहीं करेंगे. Then we perform the following steps from 4 to 6. Let us assume we are giving the inputs to the x layer and we are getting output at the y layer फिलहाल. Okay, the same thing can be applied in the reverse direction also. Now we update the activations of the y layer and calculate the net input. Okay, जैसे हम करते हैं जो भी input आएगा net input कितना है और उस पर activation अप्लाई करेंगे, ये yj equal to this function. Then update the activation of the units in x layer, calculate the net input. ठीक है, ये x layer के लिए करेंगे. Then apply the activations over the net input, ये भी करेंगे हम, और send the signal to y. ये प्रोसेस चलता रहेगा. ओके, ये चलता रहेगा. x पे इनपुट देंगे, y मिलेगा, y का इनपुट फिर x पे आएगा. तो दिस विल कंटिन्यू अंटिल वी गेट कन्वर्जेंस. ओके, नाउ इट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस ना, जैसे स्टेप 6 दिया है,
test for convergence of the net means convergence occurs if activation vectors x and y reach equilibrium. Okay, so now there is no change in the values, so we can settle down and we can get the output. Okay, तो ये इस तरह से मतलब हम लोग टेस्ट करते हैं, we get the output. Okay, now next topic is continuous bidirectional associative memory. Now what is the difference between them is you see in case of continuous BAM it transfers the input smoothly and continuously in range of 0 to 1. Okay, तो यहाँ पे इनपुट जो रहेगा 0 से 1 के बीच में रहेगा, ऐसा नहीं कि इनपुट 1 रहेगा या 0 रहेगा माइनस, ऐसा नहीं रहेगा. ओके, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 1. सो व्हाट वी डू इज वी यूज़ अ सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन. ओके, वी यूज़ अ सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन फॉर दिस केस. उसमें इसके पहले वाले केस में हमने स्टेप फंक्शन यूज़ किया था, यहाँ पे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे. नाउ द सिग्मॉइड फंक्शन ऑफ कोर्स इट कैन बी आइदर बाइनरी और बाइपोलर और बाइनरी. सो इफ द इनपुट वेक्टर्स आर बाइनरी, okay, this is the training and the target pair, the weights are determined by this formula, this one, ये formula से determine करते हैं हम लोग. Okay, then now in this case the binary activation, okay, as we have seen, we have a sigmoid function as the activation. So this is the this is what we see the binary activation. If we have a this is the sigmoid function for binary activation and this is the for bipolar activation. Okay, now using this activation functions are applied over the net input to calculate the output. Okay, so what we do, how to calculate the output, हम क्या करेंगे, net input कितना आ रहा है एक particular neuron पर, और उस पर फिर हम ये activation apply करेंगे and then we can whatever this input, ये input को हम activation apply करेंगे and then we get the output. So this was how this particular continuous BAM works. Now the next topic is analysis of Hamming distance, energy function and storage capacities. These are of course related to this BAM. Now first of all, Hamming distance. We have already covered this topic in this just definition in the previous lecture, but you'll repeat here. So Hamming distance is defined as the number of mismatched components of two given bipolar or binary vectors. So if we have like a we have already you know, this Hamming distance is also used in codes, okay, to find the error between the codes, to detect the errors and to correct the errors. For that purpose also Hamming distance use. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पैटर्न्स हैं, दो वेक्टर्स जो हमारे पास दिए हुए, इसके अंदर कितना मिसमैच कितना है वो हम उसको Hamming distance बोलेंगे. Now if we have two binary or bipolar vectors, the Hamming distance between them is the number of different bits in those vectors. तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो the Hamming distance इनके बीच में क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ बिट्स दोनों आपस में डिफर कर रहे हैं. ओके, उसके अलावा एवरेज हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय 1/n of the two. We find the distance between the Hamming distance and divide by the number of components in each vector. Okay, so let us see the example. So here in this case we have this example. Consider we have two vectors x and y. These are the elements, these are the components like 1 0 1 0 0 1, and this component of this is 0 1 1 0 1 1. Now if we see the Hamming distance, which bits are mismatching, so this is 1 and this is 0, so there is a mismatch here, there is one more mismatch here, okay, and there is a mismatch here. Now these three are not mismatching, the 1 1 0 0 1 1. So the Hamming distance is the number of bits which are mismatching, so there are 3. Now average Hamming means what, the number of mismatches divided by the total number of components. So this is total number are 5 in each, this is 5 in here 5, so we have 5 number of components are 5 and the Hamming distance is 3, so the average is 3 divided by 5. So this is the concept of Hamming distance. Now we also have a concept of the energy function which is called as Lyapunov function. Generally Lyapunov function is used to find the stability. So here also in case of BAM we are using this energy function. So the stability of a BAM is based on the energy function which is called as Lyapunov function. Now Lyapunov function of BAM is given by this particular formula. Now as in case of many physical things, we see that for any system to be stable it should have less amount of potential energy. So in nature में हम ये देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप को एनर्जी मिनिमम एनर्जी की तरफ लेके जाने की कोशिश करती हैं.
तो सेम वे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास बैम है ये स्टेबिलिटी की तरफ कब जाएगा, जब इसका ये लैपनोव फंक्शन इज लेस। ठीक है, तो हम इटरेशन में देखेंगे व्हाट अबाउट दिस लैपनोव फंक्शन कम हो रहा है, तो जितना कम होता जाएगा उतना सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाते रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज द मेमोरी कैपेसिटी और वी कैन स्टोरेज कैपेसिटी। तो मेमोरी कैपेसिटी ऑफ बैम इज गिवन बाय दिस मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस टू, where m is the number of units in y layer and n is the number of units in x layer। तो मेमोरी कैपेसिटी में देखते हैं कि अगर दोनों में जो छोटा रहेगा दैट इज़ द मेमोरी कैपेसिटी। ओके, और दूसरा तरीका जो है मेमोरी कैपेसिटी एस्टिमेट करने का, दिस अंडर रूट ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ओके, दिस इज मोर अनदर फॉर्म, या तो हम मिनिमम ऑफ m n करेंगे या फिर मिनिमम m n द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, so this is how we find the memory capacity, storage capacity of a BAM. So that's all for this particular session. Okay, thanks for watching.